गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पावर ऑफ अरेस्ट अंडर कस्टम्स एंड सीजीएसटी एक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो ऑफिशियल्स जिनके पास पावर है अरेस्ट करने की, तो वो अगर कस्टम्स एक्ट सीजीएसटी एक्ट के अंदर अरेस्ट करते हैं, उनके ऊपर सेम रिस्ट्रिक्शंस होंगी जैसी पुलिस पर होती हैं सीआरपीसी के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है ऑफिशियल्स जो कस्टम्स एक्ट या सीजीएसटी एक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं है, लेकिन उनके पास सिमिलर इन्वेस्टिगेटिव पावर्स दी जाती हैं। तो जैसे कि अरेस्ट करने की, सर्च करने की, सीजर करने की या इंटेरोगेशन की। तो कोर्ट ने रूल किया है कि ऑफिसर्स जो हैं अपनी जो है पावर्स को पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और उतने ही इनको प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जितना एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज या पुलिस ऑफिसर करता है। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया सेक्शन 4 और सेक्शन 5 सीआरपीसी जो है वो स्पेशल लॉज पर ऑटोमेटिकली लगते हैं जब तक उन्हें स्पेशली एक्ट में एक्सप्लिसिटली जो है वो ओवरराइड ना किया गया हो, एक्ट में उनको फॉरबिडन ना किया गया हो। तो कस्टम्स और सीजीएसटी ऑफिसर्स को अधेयर करना है प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स को, जैसे कि उनको मजिस्ट्रेट तक में पेश करना है 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट के, फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है अबाउट दी अरेस्ट, अरेस्टी को इन्फॉर्म करना है या अलाउ करना है कि वो अपने एडवोकेट को ला सके ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो सेक्शन 104 ऑफ कस्टम्स एक्ट में दी गई हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस में जो कि कॉग्निजेबल हैं, जैसे कि 50 लाख रुपए से ऊपर की अगर स्मगलिंग ऑफ गुड्स की है या कस्टम्स ड्यूटी इवेड की है, तो कस्टम्स ऑफिसर्स को पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सके। सेक्शन 104 क्लॉज 5 जो है क्लासीफाई करता है बाकी के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की। अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी का जो केस था 2025 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट जो है विदाउट अ वारंट बहुत ही एक्सट्रीम पावर है, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड्स की ज़रूरत है। जैसे कि मटेरियल एविडेंस पहले ही होना चाहिए आपके पास अरेस्ट से पहले, रिकॉर्डेड रीज़न होना चाहिए आपके पास कि ये पर्सन गिल्टी है। अरेस्ट जो है जो अरेस्टी जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना ताकि वो लीगल रिकोर्स ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट जो है वो सिर्फ तभी किए जा सकते हैं जब ऑफिसर के पास मटेरियल एविडेंस है सपोर्ट करने को कि जो है अरेस्टी जो है वो गिल्टी है, और ये जो रीजंस हैं इनको राइटिंग में डॉक्यूमेंट भी करने होते हैं। ठीक है। राधिका अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि सिर्फ सस्पिशन का मतलब ये नहीं होता कि मतलब सिर्फ सस्पिशन की वजह से जो है वो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ऑफिसर जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है इन राइटिंग अपने रीजंस टू बिलीव कि जो अरेस्टी है वो गिल्टी है। ओके। कोर्ट्स जो है वो इवेल्युएट करते हैं मेरिट्स ऑफ दीज रीजंस, और कोर्ट्स जो है वो ऑफ कोर्स मेरिट ऑफ द रीजंस जो है वो इवेल्युएट नहीं कर सकते, पर वो ये देख सकते हैं कि क्या जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड हैं केस से। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अरेस्टी को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए रीजंस फॉर द अरेस्ट, ताकि वो जो है लीगल रिकोर्स ले सके और अपना बेल के लिए अप्लाई कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स ऑफ अरेस्ट जो है सीजीएसटी या कस्टम्स एक्ट के ऑफिसर्स की जो है उसको स्ट्राइक डाउन करने से मना कर दिया है, लेकिन ये कहा है कि जो है कोर्जन के साथ जो है वो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी टैक्स पे करने को। अरेस्ट के थ्रेट से आप किसी को भी टैक्स पे करने को नहीं कह सकते हो। इंडिविजुअल्स जिनको फोर्स किया गया या थ्रेटन किया गया है टैक्स पे करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके अपना रिफंड भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआईटी और कस्टम्स जो हैं उनको गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी कि टैक्स पेयर्स को थ्रेटन ना किया जाए अरेस्ट के साथ अगर टैक्स रिकवरी के मैटर्स हैं तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माधव नेशनल पार्क। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सेंटर ने डिक्लेयर कर दिया है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एज कंट्रीज 58th टाइगर रिजर्व। तो इंडिया जो है वो 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन का होम है। गवर्नमेंट ने टाइगर रिजर्व्स इस्टेब्लिश किए हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। तो टाइगर रिजर्व एक स्पेशली डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरिया होता है प्रोजेक्ट टाइगर का, जो कि जिसमें कि कंजर्वेशन की जाती है वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशंस की और उनके इकोसिस्टम्स की। ये रिजर्व्स गवर्नड होते हैं बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब इसमें जो कोर एरिया है वो रिजर्व्ड होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। बफर एरिया में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है इको सेंसिटिव गाइडलाइंस के अंडर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है उसमें मतलब अगर हम देखें तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होती है अगेंस्ट पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन और एनक्रोचमेंट्स। ट्रैक की जाती है टाइगर की पॉपुलेशंस साइंटिफिक मॉनिटरिंग के थ्रू। ओके।
अगर हम देखें तो इंडिया में भी 58 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं टोटल। 2.3% ऑफ इंडिया का लैंड एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व्स में आ रहा है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीसासलम जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो है। और बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है महाराष्ट्र का। 2022 के टाइगर सेंसस के हिसाब से इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 3167 है। तो जो ये माधव नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है अभी 9 मार्च को। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये हंटिंग ग्राउंड होता था मुगल एम्परर्स का और इवन महाराजा ऑफ ग्वालियर का। इसको जो है नेशनल पार्क का स्टेटस मिला 1958 में। अगर हम यहाँ पर वेजिटेशन देखें तो नदन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं एज वेल एज ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट जो कि नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। ये पार्क ऐसा यूनिक है कि यहाँ पर लेक मीडो और फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स तीनों ही हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोच राजवंशीज। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होम मिनिस्टर जो हैं वो विजिट कर रहे हैं असम में। तो कोच राजवंशीज जो हैं वो अपनी डिमांड कर रहे हैं एसटी स्टेटस के लिए। ये एक एंशियंट ट्राइब है, एंशियंट कोच किंगडम को बिलोंग करती है। इंडिजिनस पीपल हैं ये साउथ एशिया के। ये लोअर नेपाल, नदन बंगाल, नदन बिहार, नदन बांग्लादेश, होल ऑफ असम, पार्ट्स ऑफ मेघालय और भूटान में रहते हैं। तो ये जो मॉडर्न जोग्राफिकल एरियाज़ हैं ये एक टाइम पर कामटा किंगडम का पार्ट होते थे जो जिनको कोच ही रूल करते होते थे। कई कई जगहों पर इनको जैसे असम में इन्हें ओबीसी स्टेटस मिला है, बंगाल में इन्हें एससी स्टेटस मिला है, मेघालय में इन्हें एसटी स्टेटस मिला हुआ है। राजवंशी लैंग्वेज जो है वो 1 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है एज पर 2001 सेंसस। एक कंप्लीट ग्रामर भी है इस लैंग्वेज की अपनी। ये लोग जो हैं लार्जली हिंदूज़ हैं, अपनी डीटीज़ और रिचुअल्स हैं इनके, लेकिन कुछ कन्वर्ट होकर इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी या बुद्धिस्ट में भी जा चुके हैं। प्राइमरी लाइवलीहुड इनका जो है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इंडिया के डेलीगेशन लीड करेगा एट 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है प्रमोशन के लिए जेंडर इक्वालिटी, राइट्स और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का। फंक्शनल कमीशन है ये इकोसॉक का जो कि 1946 में बनाया गया है इसको। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स शेप करता है जेंडर इक्वालिटी पर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स पर। और ये हाईलाइट करता है अर्जेंट प्रॉब्लम्स को भी जैसे सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट। 1996 में इकोसॉक ने इसका जो है मैंडेट बढ़ा दिया था और कहा था कि ये लीडिंग रोल प्ले करेगा मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन जो 1995 में अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो यही जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लोबल एजेंडा है जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के लिए। तो अब जो एनुअल सेशंस होते हैं वो इसी बीजिंग डिक्लेरेशन की ही जो है इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को जो है डिस्कस करते हैं और जो भी आउटकम्स या रिकमेंडेशन होती है हर सेशन की वो इकोसॉक को फॉरवर्ड कर दी जाती है फॉलोअप के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वानुआतू। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारे फॉर्मर आईपीएल चीफ थे, उन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया वानुआतू की सिटीजनशिप के लिए। ऑफ कोर्स वो डिनाई कर दिया गया है बट अभी। तो वानुआतू हम देखते हैं एक आइलैंड कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड में पड़ती है। ये मिडवे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड फिजी। कई तरह के वॉल्केनोज यहाँ पर जो हैं पाए जाते हैं, खासकर माउंट यासुर। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी पोर्ट विला है। पॉपुलेशन यहाँ की 94% इंडिजिनस मेलेनेशियन है। नेशनल लैंग्वेज यहाँ की जो है बिस्लामा है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये कंट्री। इकॉनमी यहाँ पर बेस्ड है एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशिंग, ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज पर। और वानुआतू में कोई इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स या एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है, मतलब आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है और ये एक मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू भी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शिंगल्स डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू ग्लोबल सर्वे में देखा गया है कि 56% जो इंडिया के पार्टिसिपेंट्स थे एज 50 एंड अबव, उन्हें शिंगल्स के बारे में नहीं पता था। शिंगल्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक पेनफुल रैश या ब्लिस्टर्स होते हैं इसमें स्किन पर, और बैंड ऑफ रैशेज़ या ब्लिस्टर्स की तरह एक एरिया ऑफ द बॉडी में या फिर मल्टीपल एरियाज ऑफ द बॉडी में ये पाए जाते हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं बॉडी में।
मोस्ट कॉमन है ये 50 साल से ज़्यादा के एज के लोगों में। होता कैसे है ये? वारिसोला जोस्टर वायरस, जो सेम वायरस चिकन पॉक्स कॉज करता है, उसी से होता है। तो होता क्या है कि जब आपको बचपन में चिकन पॉक्स होता है तो आपकी बॉडी फाइट तो कर लेती है वारिसोला जोस्टर वायरस से, फिजिकल साइंस चले जाते हैं चिकन पॉक्स के, लेकिन वायरस जो है वो हमेशा आपकी बॉडी में रहता है। जब आप बड़े हो जाते हो, एडल्टहुड में आते हो, तो ये वायरस जो है कई बार दोबारा से एक्टिव हो जाता है। और यही वारिसोला जोस्टर वायरस जो है फिर जब सेकेंड अपीयरेंस लेके आता है 50 साल की एज के बाद, उसको हम शिंगल्स कहते हैं। शिंगल्स जो है वो कॉन्टेजियस नहीं होता है। वायरस जो है वो मतलब जब ट्रांसमिट करता है, ये शिंगल्स जो है वो वही वायरस है ना, वारिसोला जोस्टर वायरस, जब ये किसी और को ट्रांसफ़र होगा तो उसी को ट्रांसफ़र होगा जिसको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। और जब ये ट्रांसफ़र होगा तो शिंगल्स नहीं क्रिएट करेगा, ये चिकन पॉक्स को ही क्रिएट करेगा उस पर्सन में, ठीक है। तो सिम्टम्स जो है उसमें पेन, इचिंग, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब होता है, फीवर, हेडेक, चिल्स, फटीग। शिंगल्स लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है और बहुत पेनफुल हो सकता है। एक वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए, शिंग्रिक्स नाम की। कोई क्योर नहीं है इसका, तो इसलिए एंटीवायरल मेडिकेशन से थोड़ी सी सिवियरिटी को कम करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जलंधेश्वरर टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जलंधेश्वरर टेम्पल जो है रानीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, वो एक ट्रेजर ट्रोव है तमिल हिस्ट्री का। तो इसकी लोकेशन जो है वो आपके रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। कंस्ट्रक्ट किया गया था इसको पल्लवास द्वारा और बाद में इसको एक्सपैंड किया गया चोलास द्वारा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। वन ऑफ द श्राइन्स है ये 275 पार्दल पेत्र स्थालम्स का, जो कि शिव स्थालम्स हैं जो ग्लोरीफाई किए थे संबंदर जी ने। संबंदर जो थे वो शैव पोएट और सेंट थे तमिलनाडु से, और कंटेम्प्रेरी थे अपर के, ओके, 7th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तेजस LCA-MK1A। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रेयर फ्यूसलेज जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-MK1A, उसको हैंड ओवर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, तो एक प्राइवेट कंपनी द्वारा। तो तेजस LCA-MK1A एक एडवांस्ड वेरिएंट है इंडिया के इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, जिसको HAL ने बनाया है। इसमें 40 इंप्रूवमेंट्स है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस तेजस MK1 वेरिएंट। एडवांस्ड एवियोनिक्स अपग्रेड किए गए हैं इसमें। डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर अपग्रेड किया गया है। ये 9 हार्ड पॉइंट्स से इक्विप्ड है ये, जो कि केपेबल है वैरायटी ऑफ वेपनरी के लिए, इंक्लूडिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, एयर टू एयर या फिर ग्राउंड मिसाइल्स, या एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। तेजस LCA है क्या? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन तो किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसकी HAL कर रहा है। ये सर्विस में एंटर हुआ इंडियन एयरफोर्स की जुलाई 2016 की, और ये मिग वेरिएंट जो हमारे पास थे उनको रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is power of arrest under customs and CGST. This topic is important for your governance section. So Supreme Court in Radhika Agarwal versus Union of India case has ruled that officials who are exercising arrest, search and seizure powers under the Customs Act and CGST Act must adhere to the same restrictions as police under the CRPC Act of 1973. So Supreme Court has clarified that while officials under the Customs Act and CGST Act are not police officers, they exercise similar investigative powers, including arrest, search, seizure, and interrogation powers. The court has also ruled that these officials cannot exceed the powers of a police officer in charge of a police station, and they must follow the same procedural restrictions. Court has explained that Section 5, 4 and 5 of the CRPC apply to special laws unless the special act explicitly overrides them. Customs and CGST officers must adhere to key procedural safeguards, including presentation before the magistrate within 24 hours of arrest, informing a family member or a friend about the arrest, allowing the arrestee to have an advocate present in the vicinity during the interrogation. Okay, so Section 104, Clause 4 of the Customs Act deals with the certain offences which are cognizable, like smuggling prohibited goods or evading customs duty over 50 lakh rupees, which allows customs officers to arrest without a warrant. Whereas the Clause 5 of the same section classifies all other offences as non-cognizable, which requires a magistrate approval for arrest and investigation. In Arvind Kejriwal versus ED case of 2025, Supreme Court ruled that arrest without a warrant is an extreme power which requires strict safeguards under the section 19 of PMLA,
which include possession of material evidence before arrest, a recorded reason to believe that the person is guilty, informing the arrestee of the grounds for arrest so that he can have or he or she can have legal recourse. Supreme Court has held that arrests can only be made if the officer has material evidence supporting their belief in the arrestee's guilt, and they must document their reasoning in writing. Okay, but and they cannot ignore evidence that may exonerate the accused. In this recent Radhika Agarwal case, Supreme Court has emphasized that mere suspicion is insufficient for an arrest. Officer must record in writing their reasons to believe that the arrestee is guilty. While courts cannot evaluate the merits of these reasons, but they can check if they are clear and logically connected to the case. Supreme Court has ruled that arrestee must be informed of the reasons for their arrest, and this would ensure that the accused can have the legal recourse and he or she can apply for bail. Okay, Supreme Court refused to strike down the powers of arrest under the CGST and Customs Act as requested by the petitioners, but it acknowledged that tax officials are misusing arrest powers to compel assessees to pay overdue taxes, and this coercion is illegal and impermissible. And court has also given uh, an option to the individuals who were forced to, or threatened into paying taxes, that they can approach the court for seeking refund of the amount which was deposited under duress. To curb such practices, court has also asked the CBIC to form certain guidelines ensuring that taxpayers are not threatened with arrest in tax recovery matters. So the next topic is Madhav National Park. This topic is important for your environment section. Recently, the center has declared the Madhav National Park in Madhya Pradesh as the country's 58th tiger reserve, and India is home to 70% of the world's tiger population. To protect these big cats, the government has established the tiger reserves under the Project Tiger initiative. So, what are tiger reserves? A tiger reserve is a specifically or a specially designated protected area under Project Tiger aimed to conserve wild tiger populations and their ecosystems. These reserves are governed by the National Tiger Conservation Authority under the Wildlife Protection Act of 1972. Uh, Key features of a tiger reserve include a core area, which is strictly reserved for wildlife conservation, and no human activities are allowed here. The buffer area, where limited human activities are permitted under eco-sensitive guidelines. The wildlife protection, which basically means strict enforcement against poaching, deforestation, and encroachments. Scientific monitoring, that is, tracking tiger populations, prey bases, and ecosystem balance using the advanced technology. So, as of 2025, India has 58 tiger reserves covering nearly 2.3% of India's land area. The largest tiger reserve is Nagarjun Sagar Srishasalam of Andhra Pradesh and Telangana, while Boer Tiger Reserve of Maharashtra is the smallest one. The 2022 Tiger Census estimated India's tiger population at 3167, which reflects a steady rise due to conservation efforts. What is Madhav National Park? So it is in Madhya Pradesh, and it was officially designated as a tiger reserve. It is situated in the Shivpuri district of Madhya Pradesh. This park was the hunting ground for Mughal emperors and Maharaja of Gwalior. It got the status of a national park in 1958. The forests of the park fall within the category of northern tropical dry deciduous mixed forests, as well as the dry thorn forests typical of northwestern Madhya Pradesh. The park is unique in having both lake, meadow, and forest ecosystems. Okay, so the next topic is Coach Raj Banshi's. This topic is important for your social issues. Ahead of the Union Home Minister's 3-day visit to Assam, Coach Raj Banshi's have renewed their demand for scheduled tribe status. Coach Raj Banshi's, they are an ancient tribe originally from the ancient Koch kingdom. They are considered as the indigenous people of South Asia. At present, they live in lower Nepal, northern Bengal, north Bihar, northern Bangladesh, whole of Assam, parts of Meghalaya, and Bhutan. These modern geographical areas were once part of the Kamta kingdom ruled by the Koches for many centuries. Um, the community is variously designated as OBC, that is in Assam, Supreme. Scheduled caste in Bengal, and scheduled tribes in Meghalaya. So Rajbanshi language is spoken by 1 crore people as per the 2001 census. It also has a complete grammar. These people are largely Hindus with their own deities and rituals. There are also Christian and Buddhist. There are also Christian and Buddhist Rajbanshis. Some of them have also converted into Islam. The primary livelihood of the tribe is agriculture and farming. So the next topic is
Commission on the Status of Women. This topic is important for your social issues and international relations. So, Union Minister for Women and Child Development will lead India's delegation at the 69th session of the Commission on the Status of Women at the United Nations headquarters. So, this Commission on the Status of Women is a global intergovernmental body exclusively dedicated to the promotion of gender equality, rights, and empowerment of women. So, it is part of the United Nations. It is a functional commission of the ECOSOC, which was established by ECOSOC resolution of 1946. So it helps in the shaping of global standards on gender equality and the empowerment of women and girls. The CSW can also highlight urgent problems like the situation of women and girls affected by conflict. In 1996, ECOSOC expanded the Commission's mandate and decided that it should take a leading role in monitoring and reviewing progress and problems in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action. So, Beijing Declaration and Platform for Action was adopted by 189 countries and is the most comprehensive and transformative global agenda for the achievement of gender equality and empowerment of women and girls. Okay. So this is the base upon which all the annual sessions are held to discuss the progress and gaps in the implementation of this declaration. The outcomes and recommendations of each such session are forwarded to ECOSOC for follow-up. So the next topic is Vanuatu. This topic is important for international relations. So fugitive former IPL chief Lalit Modi recently applied for the citizenship of Vanuatu. Of course, it was later denied. So anyways, what is Vanuatu? It is an island country located in the South Pacific Ocean. It lies east of Australia and north of New Zealand, or midway between Australia and Fiji. It is home to several active volcanoes, including Mount Yasur. So its capital and largest city is Port Vila. The population here is about 94% indigenous Melanesians. National language of the Republic of Vanuatu is Bislama. It is a type of parliamentary democracy. The economy is based on agriculture, tourism, fishing, and offshore financial services. Vanuatu does not have income tax, withholding tax, capital gains tax, inheritance tax, or exchange control. It offers a citizenship by investment program, allowing foreigners to obtain citizenship in exchange for a financial contribution. Passports also provide a major source of government revenues to the Vanuatu government. So the next topic is shingles disease. This topic is important for your social issues. So a new global survey has shown that 56.6% of the Indian participants, which are aged 50 and above, know little to nothing about shingles. Shingles is a viral infection which is caused by an outbreak of painful rash or blisters on the skin. The rash most often appears as a band of rashes or blisters in one area of the body. It can occur anywhere on the body. The risk of shingles goes up as you get older, and it is the most common in people over age 50. Shingles is caused by the varicella zoster virus, which is the same virus which causes chickenpox. When you have chickenpox as a child, your body fights off the varicella zoster virus, and the physical signs of chickenpox fade away, but the virus always remains in your body. In adulthood, sometimes the virus becomes active again. This time, the varicella zoster virus makes its second appearance in the form of shingles, and shingles is not contagious, but the virus can be spread to someone who has never had chickenpox. This will cause chickenpox, but not shingles. The symptoms of shingles can include pain, itching, tingling, and numbness, as well as fever, headache, chills, and fatigue. Shingles is not life threatening, but it can be very painful. There is a vaccine called Shingrix, which is available. There is no cure for shingles, okay? But of course, antiviral medications can reduce the severity, okay, and duration of the shingles. So the next topic is Jalantheshwara Temple. This topic is important for our art and culture section. So Jalantheshwara Temple, located in Ranipet district, is a treasure trove of Tamil history. So this temple is an ancient Hindu temple dedicated to Lord Shiva, situated in Thakolam village of Ranipet district of Tamil Nadu. The presiding deity here is Lord Shiva. The original temple complex was constructed by Pallavas and later expanded by the Cholas. The temple complex spans approximately 1.5 acres. It is one of the shrines of the 275 Padal Petra Sthalams, which are the Shiva Sthalams glorified by the Tamil Shaivite poets and Sambandar. Sambandar was 7th century Shiva poet saint from Tamil Nadu and a contemporary of Appar. Okay.
The next topic is Tejas LCA Mk1A. This topic is important for your security section. So, the first rear fuselage for light combat aircraft Mk1A produced by private Indian industry has been handed over to the Hindustan Aeronautics Limited. So, Tejas LCA is an advanced variant of India's indigenous light combat aircraft Tejas developed by the HAL. It incorporates more than 40 improvements over the previous Tejas Mk1 variant. The key upgrades include advanced avionics suits. The aircraft also features an upgraded digital fly-by-wire flight control computer. It is equipped with 9 hard points capable of carrying a variety of weaponry, including beyond visual range missiles, air to air ground missiles, advanced short range air to air missiles. So, what is Tejas LCA? It is indigenously developed LCA or light combat aircraft designed by Aeronautical Development Agency and manufactured by the Hindustan Aeronautics Limited. It entered into service with the Indian Air Force in July 2016, and it aims to replace the aging fighter jets like MiG variants currently in service with the Indian Air Force. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.